Hello children, today we will be starting a new chapter, arrays. First of all, what an array is. Now we all know that primitive data types like integer, character, boolean, float, long, double, they are used to declare variables that can store a single value in memory. But if we require a lot of values to be stored of the same data type, arrays come to our rescue. So arrays are required to handle a set of values by using a single variable. Now arrays are of two types, single dimensional and double dimensional. Single dimensional arrays are also called as 1D arrays. These are also called as 2D arrays. One dimensional, two dimensional. An array, suppose I am declaring an array of integer type, I am writing ARR. If I make one square bracket, that means it is having one dimension. If I am making two square brackets, it means it is having two dimensions. What does it mean? One dimension means that an array is stored in the form of a line like this. This is index number 0, index number 1, index number 2, index number 4, index number 5 and 6. So this will be referred to as ARR at position 0. This will be referred to as ARR at position 1. This is ARR at position 2, like this. This is a single dimensional array, and these are different variables referred to by a common name, and all will store integer values in them. Suppose here we can store the value 5, here we store the value 10, here we store the value 12. How do we refer? How do we initialize? ARR 0 equals to 5, like this, and semicolon. How do we initialize at position 2? ARR at position 2 equals to 12, like this. This is how we initialize into a single dimensional array. Now what is a double dimensional array? It is in the form of a matrix, a row and column format, like this. This is row number 0, row number 1, row number 2, row number 3. This is column number 0, 1, 2, 3, 4. If I have to refer to this element, I will be writing the name of the array and row number and column number. If I have to refer to this element, it will be ARR, row number is 0 and column number is 1. First is the row number, the second is the column number. This is how a element in a two-dimensional array is referred to. So for now we will be doing firstly the single dimensional arrays. I hope you have understood how we refer to them. How do we initialize in them? Okay. So I am starting with single dimensional arrays first. Single dimensional array. What is the general format? First we write the data type. The data type is, we write it as type, then the array variable equals to new, and then the type again, and in bracket we write size. This is how we declare a single dimensional array. For example, if I write int, the name of the variable ARR equals to new int and the size is 10. That means ARR is the name of the array which is of integer type and it is used to hold 10 integer values. So ARR 0 से लेकर ARR 9 तक ऐसे हम initialize कर सकते हैं. Always the index number of an array starts with 0. So ARR 0 में हम कुछ initialize कर सकते हैं. Then ARR 1 में like this ARR 9 तक. If I try to initialize in ARR 10, it will give an error. This is wrong, because since it is holding 10 integers, the index number of the array variables will start from 0 till 9. It will always start from 0. This is how we initialize in an array. Now we come to entering of array elements.
How do we enter the array elements? First method is using assignment statement. Okay, using assignment statement. How do we do it? Suppose I have to initialize the number of days like this of various months. So I will write int days. सिर्फ मैंने ही खाली छोड़ा हुआ है, इसका मतलब जितनी वैल्यूज होंगी उतना इसमें इनिशियलाइज हो जाएगा. 31 जनवरी में, फिर 28 फरवरी में, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड सेमीकोलन. देखो मैंने ये डायरेक्टली डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन एक साथ किया हुआ है यूजिंग द असाइनमेंट स्टेटमेंट. इसका मतलब क्या है? ये एक एरे बना है विथ वैल्यू 12. इसके अंदर 12 वैल्यूज हम स्टोर कर सकते हैं. एंड कैसे रेफर करेंगे? डेज 0 की तरह, डेज 1 की तरह, लाइक दिस. अगर मैं यहाँ लिखूँ SOPLN डेज 0 तो इट विल प्रिंट 31. इफ आई राइट SOPLN डेज 1 it will print 28 like this. If I write SOPLN days 11 it will print 31. If I write SOPLN days 12 it will give an error message. This is how we assign. Understood? We can also assign character type values like this. Char ch1 equals to like this, COMP comp. तो CH1 एट पोजिशन 0 पे क्या आ जाएगा? C, कैरेक्टर C. CH1 एट पोजिशन 1 पे क्या आ जाएगा? O. इस तरीके से कैरेक्टर टाइप वैल्यूज भी एक एक सिंगल कैरेक्टर की तरह इनिशियलाइज कर सकते हैं कैरेक्टर एरे में. दिस इज अ कैरेक्टर एरे, दिस इज एन इंटीजर एरे. दिस इज हाउ वी असाइन. अंडरस्टूड? द सेकेंड मेथड इज यूजिंग मेथड आर्ग्यूमेंट. By using method argument. कोई एक मेथड है void fun, इसमें मैंने ऐसे यूज किया है. अंडरस्टूड? हमने ये मेथड्स क्लास 10th में पढ़े थे, क्लास 11th में भी पढ़े थे. मेथड्स मीन फंक्शंस. एक फंक्शन है यूजर डिफाइंड फंक्शन. अब इसके अंदर मुझे इनिशियलाइज करनी है वैल्यूज, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, for I equal to 0 int I is less than 10 I plus plus m of I equals to कुछ भी इनिशियलाइज कर दो, या system.out.println के थ्रू मैसेज देकर एंटर कर लो यूजर से sc.nextInt लाइक दिस. इससे क्या होगा? sc इज अ स्कैनर क्लास ऑब्जेक्ट. यहाँ पर डिक्लेयर कर लीजिए स्कैनर क्लास ऑब्जेक्ट. न्यू स्कैनर system.in. ओके, न्यू स्कैनर system.in. यहाँ पर इससे क्या हुआ? एक इंटीजर वैल्यू उसने एंटर करी और m एट पोजीशन 0 पे इनिशियलाइज कर दी. फिर लूप चला, i की वैल्यू हो गई 1, एक और एंटर करी उसने इंटीजर वैल्यू एंड m एट पोजीशन 1 में इनिशियलाइज कर ली. सो मेथड आर्ग्यूमेंट की तरह भी हम यूज कर सकते हैं इसको. अंडरस्टूड? अब मेथड आर्ग्यूमेंट की तरह यहाँ पर मैंने स्कैनर क्लास यूज किया है, तो इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास की तरह भी तो यूज कर सकते हैं. यूजिंग इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास, उसमें भी तो यूज कर सकते हैं. कैसे यूज करेंगे? बिल्कुल वैसे ही. देखिए int m इक्वल्स टू न्यू int 10. मैंने ये डिक्लेयर किया. दिस इज एन इंटीजर एरे विच विल बी स्टोरिंग 10 इंटीजर्स. फिर मैं क्या करूँगी? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन. आई एम नॉट राइटिंग द कंप्लीट प्रोग्राम. इसमें बफर्ड रीडर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इनपुट स्ट्रीम रीडर एंड बफर्ड रीडर का. फिर SOPLN एंटर मार्क्स इन 5 सब्जेक्ट्स. देन सेम फॉर I इक्वल्स टू 0 I इज लेस देन एंटर मार्क्स इन 10 सब्जेक्ट्स 10 I प्लस प्लस m ऑफ पोजिशन I इक्वल्स टू इंटीजर डॉट पार्सेंट. इंटीजर डॉट पार्सेंट
and then in dot read line. स्कैनर क्लास ऑब्जेक्ट में हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया था, नेक्स्ट इंट. इसमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं, नेक्स्ट लाइन, एंड पार्स इंट के थ्रू उसको इंटीजर वैल्यू में चेंज कर रहे हैं. इट मीन्स द सेम, यू कैन enter through this or you can enter through this. It will give the same answer. So I hope that entering in an single dimensional array is clear to all of you. In the next session we will be discussing about certain operations on single dimensional arrays. Please go through the chapter till then. Thank you children.